हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 फिगर्स, कंपाउंड वर्ड्स एंड इंटरसेक्शंस. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फिगर्स. Figures 1 to 7 and the figure 9 are best represented by shortened outlines when they stand alone. जब तो ये सिंगल फिगर्स आती हैं तब हम उनकी आउटलाइंस को शॉर्टन में लिख लेते हैं. बट अदर नंबर्स एक्सेप्ट राउंड नंबर्स और राउंड नंबर्स के अलावा आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी अरेबिक न्यूमरल्स. अब जैसे बहुत बड़ी फिगर आई तो अब उसमें हम राउंड नंबर्स के लिए आउटलाइन यूज़ करते हैं और बाकी जो नंबर्स हैं उनके लिए हम अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ कर लेते हैं. राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. n on the line for 100 or 100th as in 700. तो 7 एज अ अरेबिक न्यूमरल यूज़ करके हमने राउंड नंबर 100 के लिए n यूज़ किया ऑन द लाइन. सिमिलरली 200 पाउंड्स, 2 हमने यूज़ किया एज अ अरेबिक न्यूमरल एंड n is used here for 100 and p halved here with ns circle is used here for pounds. Ith or ith with s circle is used here for 1000 or thousands as in 5000. 5 as a Arabic numeral with ith for 1000. 2000 pounds, 2 as a Arabic numeral, ith with s circle is used here with p halved here for the sake of d with ns circle is used here for pounds. Next is 300,000. 3 is used as Arabic numeral, n is used here for 100 and ith is used here for 1000. M for million, m on the line is used here for million as in 4 million. 4 written as Arabic numeral and m is used here for million. Next is 200 million. 2 as Arabic numeral is used here, n for 100 and m is used here for million. Next is b on the line for billion. 2 billions. 2 Arabic numeral used here with b with a circle for billions. d above the line for dollar. 2 billion dollars. 2 b for billion and d with a circle for dollars. Next, compound words. Compounds of here, there, where are written as follows. अब कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनके साथ क्या है, ये वर्ड्स ऐड हुए हैं. एज इन हियर इन, एच का टिक डाउनवर्ड आर फॉर हियर एंड एन स्ट्रोक इज यूज हियर फॉर इन थ्रू द लाइन. नेक्स्ट इज हियर ऑन, एच का टिक डाउनवर्ड आर विद एन हुक इज यूज हियर थ्रू द लाइन. नेक्स्ट इज हियर एट, एच का टिक डाउनवर्ड आर थ्रू द लाइन विद टी. नेक्स्ट इज हियर टू, h का tick downward r with 2 short form is used here. Here off, h का tick downward r through the line with f stroke. Here with, h का tick downward r through the line with stroke d. Thickened stroke is used here. Here after, h का tick downward r through the line and disjoint f doubled is used here for after. Next is there in, alternative form of the with r hook with n stroke on the line. Next is there on, similar outline with n hook on the line. there की तो similar ही रहेगी outline. Next is there at, there on the line with t through the line जाएगा. Next is there to, there on the line and to का tick is used here. Next is there off, there on the line, f stroke is used here for off. There with, there on the line, d stroke is used here for with. Thereafter, there on the line and a double form of f is joined here for after. Next is wherein, wh form is used here with upward r with n stroke for wherein. where की outline same रहेगी. where on के लिए n का hook. Next is where at, where की outline with t. Next is where to, where की outline with the tick of 2. Next is where off, where की outline with f. Next is where with, where की outline with stroke d is used here for with. Where after, where की outline f is doubled here for the sake of after. Clear है? Next is intersections. The practice of intersecting one stroke
through another is a very useful device for the representation of very commonly occurring phrases। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो हम स्ट्रोक्स बनाते हैं उसके लिए हम एक पर्टिकुलर साइन चूज करते हैं जिससे हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं। अभी आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। द डिवाइस मे बी अडेप्टेड टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ द राइटर। और ऐसा करने से जब हम स्पीड पर जाते हैं, एक्यूरेसी पर जाते हैं, तो हमें ये इंटरसेक्शन जो है वो हेल्पफुल रहता है। थस for some shorthand writers, the stroke P might usefully represent the word party। अब हम पार्टी पूरा लिखने की बजाय P से इंटरसेक्ट कर देते हैं कमिंग वर्ड को या बाद के वर्ड को, जो भी उससे रिलेटेड होता है, तो इजीली हम उसको स्पीड पे लिख सकते हैं। भाई पार्टी की पूरी हम आउटलाइन ना बनाकर सिर्फ P इंटरसेक्ट कर देते हैं उससे रिलेटेड वर्ड को, तो वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए। Whereas in an insurance office, the stroke P might better be used to represent policy। सिमिलरली हम पॉलिसी के लिए भी P यूज़ करते हैं, लेकिन उसको क्या किसी वर्ड के साथ इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो ये कैसे कैसे यूज़ होता है कि अगर आप इंश्योरेंस ऑफिस में हैं तो आप पॉलिसी एज ए P यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब कि आपकी किस जगह की जॉब है, तो आप उस हिसाब से इंटरसेक्शंस यूज़ करते हैं। वेयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, राइट वन स्ट्रोक क्लोज टू अनदर। अब हर जगह इंटरसेक्शन प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम इंटरसेक्ट नहीं कर पाते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वो पर्टिकुलर स्ट्रोक जो हमने इंटरसेक्शन के लिए चूज़ किया है उसको नियर बाय द वर्ड लिख देंगे, तो वो रिप्रेजेंट कर देगा इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ एनी अदर वर्ड। ठीक है। द फॉलोइंग लिस्ट शोज़ हाउ द डिवाइस में बी यूज्ड। और ये लिस्ट से हमें पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा। पी रिप्रेजेंट्स पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी। अब पार्टी अगर शुरू में आता है तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द वर्ड इंटरसेक्ट होगा, और अगर लास्ट में आता है तो लास्ट स्ट्रोक ऑफ द वर्ड इंटरसेक्ट होगा। क्लियर है। कंजर्वेटिव पार्टी, कन डॉट ए सर्कल अपवर्ड आर ऑन द लाइन वी स्ट्रोक T stroke with V hook is used here, cut T with P for the sake of party, and double tick underneath for the sake of proper noun। Next is B, represents bank और bill, दोनों चीज़ें ही represents करता है। बैंक रेट, अब B पहले आया तो हमने R को इंटरसेक्ट किया, वो रिप्रेजेंट करेगा कि B बैंक पहले आया है। ठीक है। रेट बनाएंगे R upward with T on the line and intersect R with B for the sake of bank। Next is city bank, a circle through the line T and intersect B for the sake of bank। bill of lading, lading बनाएंगे पहले, upward L on the line से स्टार्ट करते हुए D with NG stroke is used here। B यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा upward L को for the sake of bill। Next is T represents attention, early attention, downward R upward L on the line, T cut here at the end of upward L for the sake of attention। D represents department, foreign department, F above the line, upward R with N hook is used here, whole outline above the line, and D intersect here for the sake of department with upward R। J represents charge, this charge, the stroke with a circle on the line for this, and J cut here for the sake of charge। Free of charge, alternate form of FR through the line is used here, J intersect here for the sake of charge। J represents journal, banker's journal, B above the line, NG with R hook with a circle is used here above the line, whole outline, J intersect here at the end of the outline for journal। नेक्स्ट इज जर्नल ऑफ कॉमर्स, अब इसमें पहले आया है तो पहले कट होगा। के विद एम विद आर हुक विद ए सर्कल अबव द लाइन इज यूज्ड हियर, जे इंटरसेक्ट हियर एट द बिगनिंग with K for the sake of journal, and double tick underneath in the both outlines for the sake of proper noun। Next is K represents company, cover or captain, D with a circle on the line and K intersect here for the sake of company, this company। Under separate cover,
N stroke thickened here, halved here for the sake of under, and S circle with P is used here for separate, and K intersect here at the end for cover. Captain Thompson. T with MP stroke with S circle with N stroke above the line whole outline, and K intersect here at the beginning for captain. Double tick underneath for proper noun. G represents government, government official. F above the line with shall. Upward ish with L hook is used here, whole outline above the line. G cut here at the beginning of a word for government. G with N hook represents beginning, at the beginning. T with the hook above the line, and G with N hook intersect here for beginning. F represents form, necessary form. N stroke on the line, double S circle is used here, upward R is used here, and intersect at the end of the word for form with F stroke. As a matter of form, S circle for as, and M doubled here for the sake of matter, and F stroke at the end of M cut here for the sake of form. Next is it represents month. In a month's time. N stroke above the line, intersect it with ith stroke on the line, S circle, T, and M is used here for time. For a month, F above the line for, and intersect at the end of the stroke, ith for month. Next month, N stroke on the line with S circle with ith stroke is used here for the sake of month. S represents society, agricultural society. G with R hook, K with L hook, T with R hook with upward L, whole outline above the line, and cut here at the end of the word with S stroke for society. M represents manager, morning, or mark. General manager. J with N hook on the line, cut here with M for the sake of manager. Monday morning, M stroke N stroke D stroke on the line, and cut at the end of a word for the sake of morning. Double tick underneath for the sake of proper noun. Auditor's mark. D above the line, T with R hook with S circle, cut through the line. Cut here at the end of the word with M stroke for the sake of mark. N represents national, national affairs. F stroke above the line से start करते हुए downward R with S circle, cut through the line. N stroke intersect at the beginning of a word for the sake of national. L represents limited, Robinson Limited. Upward R above the line से start करते हुए B stroke, N stroke, S circle, another N stroke is used here. Upward L intersect at the end of the word for the sake of limited. Double tick underneath for the sake of proper noun. Ray represents require, required, requirement, or railway. You may require. U का diphthong, M का stroke on the line. At the end of a word, it intersects with upward R for the sake of require. Will be required. Through the line से cut करते हुए will upward L जाएगा with B stroke and intersect with R stroke for the sake of required at the end. Your requirements. Downward R is used here for your and intersect with upward R with a circle for the sake of requirements at the end. Railway officials. F stroke above the line, upwardish with L hook with a circle is used here, whole outline above the line, intersect at the beginning with upward R for the sake of railway. R represents arrange, arranged, arrangement. Please make arrangements. P with L hook through the line, S circle, M stroke, K stroke is used here. Downward R with S circle, intersect at the end of the word for arrangements. We have arranged. Way on the line, V stroke on the line. Disjoint form of downward R is used here for the sake of arranged. यहाँ intersect नहीं किया क्योंकि intersect करना convenient नहीं है, तो हमने क्या किया, उसे disjoint form दिया. KR represents corporation or kernel. Public corporation. P on the line, B through the line. KR intersect at the end of the word for the sake of corporation. Colonel Alexander. Downward L
above the line, with gay with S circle with N doubled here for the sake of dr. Kr intersect at the beginning of the word for the sake of kernel. Pr represents professor. Professor Jackson. J above the line, K with S circle with N stroke is used here. P with R hook intersect at the beginning for the sake of professor. Double tick underneath for the sake of proper noun. These are the short forms of this chapter. N stroke intersect here with V stroke with N hook on the line for the sake of inconvenience, inconvenient, inconveniently. D on the line, ST loop with NG stroke is used here for the sake of distinguish and distinguished. N stroke above the line, disjoint K is used here for the sake of income. B stroke on the line, disjoint K is used here for the sake of become. B stroke on the line, NG stroke disjoint here for the sake of becoming. Well on the line, K disjoint here for the sake of welcome. N intersect with V on the line for nevertheless. These are the next exercises जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर, ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल.